IPL. वेल कैप्टन चेंज, रिजल्ट चेंज फॉर सीएसके और यही तो हम देखना चाहते थे। कमबैक कर चुकी है सीएसके, 13 रन से सनराइजर्स को हराया है। वो टीम जो 5 मैच लगातार जीती थी, लेकिन सीएसके के फैंस ना आज बहुत खुश हैं क्योंकि मैच जीते हैं। लेकिन वो ना मैच से पहले ही खुश थे। एक वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ जिसमें पता चलेगा क्यों वो पहले खुश थे, क्योंकि एमएस धोनी के आगे लग गया था कैप्टन एमएस धोनी और ये उनका एज अ कैप्टन इस सीजन का पहला मैच था। तो त्रिशा, लेट्स प्ले द वीडियो फर्स्ट। Chennai is at the 9th position in the table. They need some sort of miracle to qualify for the playoffs. Yes, and Dhoni is back as a captain. Who knows, this might be just the turning point for CSK. On the other side, SRH is looking in tremendous form. It's not going to be easy for them, but when you have Dhoni in your side, anything is possible. It will be interesting game today because SRH is having super bowling attack. Umran Malik has taken recently 5 wickets in the match and looking really a lethal weapon for them. On the other side, Chennai has won only 2 matches and they have to really speed up their guns and come all guns blazing today at Pune's MCA Stadium. Abhijit Deshmukh, MCA Stadium, Pune. तो क्या लगता है आपको आज धोनी कैप्टन बने फिर से? यू थिंक इट्स अ गुड मूव? डेफिनेटली। आप बताइए, आज एसआरएच के अगेंस्ट मैच है, एसआरएच भी काफी अच्छा फॉर्म में है। सो राहुल त्रिपाठी भी जो एसआरएच से खेलते हैं वो पुणे से है, तो लगता है आज वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन अभी धोनी कैप्टनशिप है तो स्ट्रेटेजी अच्छी करेगा, वो सब अच्छा वो सीएसके की साइड पे ही जाएगा सर। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है धोनी ने वापस कैप्टनशिप लेना, इज इट अ गुड थिंग फॉर सीएसके और नॉट? गुड थिंग। You see here, this is wonderful Dhoni's replica made by these guys. मैं हूँ समीर मलिक का पेंटर। कहाँ से हो आप? नहीं, बट धोनी का यही अपने पोजीशन क्यों लिया? क्या स्पेशल इसके बारे में? फिनिशर। नहीं, एक्चुअली विनिंग पोजीशन है उसका। विनिंग पोजीशन आफ्टर द स्टंप करता है ना वो। लिफ्ट द स्टंप। वाह, थैंक यू अभिजीत फॉर द वंडरफुल वीडियो। और ये है फैंस, देखिए हर फैन जानता है कि धोनी आते हैं तो मास्टरमाइंड आता है और कई बार आप ऐसे डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेते हो जब आप कैप्टन होते हो, और वो आज दिखे भी। सबसे पहले जयदीप आपके पास आऊंगी। 200 रन क्रॉस किए, पहला पॉजिटिव। ऋतुराज गायकवाड़ ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। 2 लोकल प्लेयर पुणे के, मुकेश चौधरी 4 विकेट, ऋतुराज 99। Yeah, today we saw the Rituraj जो जिसको हम जानते हैं is out of form, but he's had a very good Mustaq Ali. He's had a very good, but that's how the game goes sometimes. It just doesn't go your way. But you know, it's amazing that Mahendra Singh Dhoni is captain and everything falls in place. It's not like that. It's not that okay, Rituraj अच्छा आज कौन कप्तान है? धोनी है, मैं 99 बनाता हूँ, ऐसा तो है नहीं. You know, things just he's been trying every day as is everybody else. Conway also played his part. Dhoni played number 3 for CSK in the first time ever. So there are some amazing stats in there. I saw another stat that they became the 22nd team to get a double to get 200 plus in the IPL. In fact, RCB was the team that's got 21. So just goes to show how good RCB batting has been over the years. Also, they play in Bangalore and Chinnaswamy, and Veda knows that place better than all of us. But the point I'm trying to make here is that everything fell in place today. But I think there's enough for CSK to worry about their bowling. Because in spite of getting 200 against a team like Hyderabad, which is not really power packed, they've got 2-3 players who can really play power pack, but they've also got some players who play at 120, 130 strike rate. So in that, today, can you imagine with Nicholas Pooran, if there was another Tewati at the other end or Hardik Pandya at the other end, what could have happened? So they have enough worries with the bowling. The batting has gone through, but Dhoni will be worried about the bowling and what combination he should play.
एब्सोल्युटली वेदा बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जीते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अभी भी रेक्टिफाई करनी है, स्पेशली बॉलिंग साइड और बॉलिंग से ज्यादा फील्डिंग। सीएसके वो टीम है जिसने 19 कैचेस अभी तक छोड़ चुके हैं इन मैचेस में, जो सबसे ज्यादा है किसी भी टीम के लिए इस साल। कहीं ना कहीं फील्डिंग इफेक्ट कर रही है बॉलिंग को। मुकेश चौधरी ने अच्छी बॉल डाली लेकिन फील्डिंग ने लेट डाउन किया। Obviously, जब अभी अगर आप match when you're losing too many games, so there will be something which is an X factor. So today we saw that initially also Abhishek Sharma's catch was dropped in the power play, and then he scored 39 odd runs. So when you drop crucial catches and they keep adding on 15-20 runs, it makes a big difference. We saw both the games today, though Lucknow and Chennai won, but they were horrible on the field. To be honest, because there was a lot of misfielding, there was a lot of catches dropped. You can't keep winning matches. Maybe one odd matches here and there you'll win, considering that there is buffer of so many runs. But the close games will actually come to you, and it will come back biting. Yeah, today we saw that it was 200 runs, but still they got so close. Had those catches been taken, they probably would have been wrapped up for 150 or 60, and the big win could actually make a difference in the net run rate for both the teams. ट्रू। इसी में मैं कह रही थी कि अगर शायद वो कैचेस पकड़ लेते तो नेट रन रेट में भी थोड़ा सा इजाफा करते। लेकिन दामिनी आपके पास आते हैं 182 रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप। धोनी आया, कैप्टनशिप वापस आई, मास्टर माइंड वापस आया, लेकिन साथ में लक भी वापस आया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया कॉनवे ने, जिस तरह से मैच शुरू किया और खत्म भी किया। थोड़ा सा मोमेंटम जरूर खोया था लेकिन बहुत से पॉजिटिव भी हैं इस मैच से लेने के लिए। या तो मैं यही कहूँगी कि शायद धोनी वापस आ गए हैं, उनका शायद प्रेजेंस ही इज मोर देन एनफ कि प्लेयर्स को वो इंस्पायर कर सके कि आई एम देयर फॉर यू एज अ सपोर्ट सिस्टम ही वो काफ़ी है, जो देखने को भी मिला। ऋतुराज गायकवाड और डेविड कॉनवे ने शायद आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स पार्टनरशिप का एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। ओपनिंग पार्टनरशिप उनका शायद अभी तक हाईएस्ट, उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनफॉर्चुनेट कि ऋतुराज मिस्ड आउट ऑन हिज वेल डिजर्व्ड सेंचुरी बाय दैट वन रन, but hats off to both these players, and it's very good to see ऋतुराज गायकवाड फाइनली गेटिंग बैक हिज फॉर्म। उन्होंने जिस तरह से आईपीएल उनका शुरू हुआ था, देख के लग रहा था कि शायद सीएसके ने गलती की है उनको अपने टीम में रख के, लेकिन जो बैकिंग किया, जैसे बार बार कहते हैं ना कि आप अपने मैच विनर्स को बैक कीजिए। ऋतुराज ने प्रीवियस सीजन में सीएसके के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, तो इस साल भी जो उनको जो बैकिंग मिली है, और ये धोनी जो वापस आए हैं एज कैप्टन, और धोनी का एक हम तो जानते ही हैं वो किस तरह से अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, जूनियर्स को बैक करते हैं, तो शायद दैट हैज वर्कड अ लॉट पॉजिटिवली फॉर ऋतुराज, जो आज देखने को भी मिला। अनफॉर्चुनेटली मिस्ड आउट ऑन हिज सेंचुरी, बट the kind of contribution he did literally set up the innings. एब्सोल्युटली। और जयदीप एग्री करेंगे आप, लेकिन साथ में एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी। जो बैटिंग उन्होंने किया, जो शॉट्स उन्होंने खेले फुल फेस ऑफ द बैट से, जो उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से मारा, सामने ज्यादा खेला। आज वो पीछे खेलने कम गए, आउट भी वैसे हुए थे, लेकिन जो शॉट्स उन्होंने सामने खेली वही उनकी स्ट्रेंथ है। Yeah, today he looked absolutely in sync, and I think the pace that they gave him worked in his favor. Rituraj Gaikwad is a player who likes pace on the ball because he uses the depth of the crease. We saw some hooks, some short-arm pulls, a cut. They bowled a little short to him initially. When you're out of form and don't have runs behind you, then you are better off the back foot than of the front foot. I mean, let me explain that better. You rather want to be cutting and pulling than driving off the front foot with a new ball when it's swinging around. So I don't think they bowled well initially to him. At the testing times, they bowled a little short to him and he got away. Once he got to 25-30, he was in autopilot mode, and then he looked really good. But we know what he is capable of. He is a player who can do this, and it's surprising that a player of his repute has taken this long to get going. But that's how the world works, because we expected, ठीक है, 2 गेंद 3 गेंद 4 गेंद अगर विराट कोहली के इतना गेम लग सकता है तो ऋतुराज गायकवाड लग ही सकता है। बिल्कुल। वेदा, आज जडेजा कैप्टन नहीं थे, कहते हैं वो बर्डन उनसे उतरता हुआ नजर आया। कैचेस उन्होंने पकड़े जो पिछले मैच में छोड़े थे, 3 ओवर 15 रन। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वो कैप्टनशिप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बर्डन नजर आ रही थी। लेकिन आज अच्छा उन्होंने बॉल डाला, एयर में भी स्लो डाला। एक मौका बनाया था केन विलियमसन का, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ धोनी से। लेकिन अच्छी वापसी यहाँ कह सकते हैं जडेजा की।
Actually, when people like all of us are talking about, Dhoni is back, Mastermind is back, but I don't really understand. He was the one who was running the show. It was just Jadeja who was in front, and obviously it was everything was done by Dhoni itself. नहीं, वेदा वेदा क्या होता है ना कि जब आप कैप्टन No, बनते हैं या किसी को बनाते हैं, let बिहाइंड द me फुल tell you. No, wait, I've not finished this yet. So the whole idea of it is not about Dhoni is back or Mastermind is back. I'd only say probably the luck factor, because I believe a lot every player have different kind of luck, and Dhoni is luck when it comes to captaincy. There is a lot of thing. So coming to what Jadeja felt, it takes a lot to actually go out and say, like, this is a burden, or I don't want to take on this responsibility, I want to give it back to you. Not everybody does that. A lot of people try to be in that game and say, like, nay, I'll manage, I'll be able to do it after 2 games, let me see. So but you need to give credit to Jadeja to actually opening up and saying that, boss, this is not happening, so can you just take it back and let me concentrate more on it. So we can see that difference, the responsibility, what as a senior player, as a leader, he is in the group. I think given a job when he has a clarity that what needs to be done, it is more peaceful, though, for the fact that he knows that Dhoni was always there. Kahin na kahin it will be in back of the mind, like, abhi next who should I get, who should go into bat, and where should I put these fielders. But now, since entire control, like officially is handed over to him, so I feel like that kind of must have given him a big relief, and having 200 on the board must have given him another extra bit of peace in the head, saying that we have a big target on board and I can just go and bowl freely. Yeah, I थोड़ा सा kind of मैं agree. इसमें I kind of agree with Veda on the fact that it's not that Dhoni is part of the support staff. He's in the Yeah, ground. yeah, He's in the ground, and Jadeja and he are talking every over. While we are watching the commercials, they are talking. They're crossing each other. He's in the infield. He's keeper. So चल क्या क्या पाजी क्या लग रहा है इसको देखते इसको देख और तू कर ले इधर से आके. You know how it is, how it's been with us in the ground. Yeah, but I think everything is fallen in place. It's not just because Dhoni was captain, everything has happened. It's not like yeah, that. But I think the fact that now he is not at the forefront is what is probably the only thing that's changed. Abhi, as yeah, I showed you all, that Dhoni is talking in the yeah, pre-show, in the post-show, Jadeja is not. So yeah, that is the only thing that's changed. But while you're fielding, Dhoni is there. While you're batting, you don't need to captain. You just need to do your job. And you got to make sure the other guy is doing his job. So from that point of view, I mean, today, because they've had a thumping win and everything is fallen in place, yeah, Dhoni is I mean, we don't need to speak about his captaincy and him as a player. But it's not that if today Jadeja was captain, this also could have happened. But it's yeah, just that this has happened. And maybe Jadeja's bowling is the only place, thoda yeah. dheere dal, wickets are helping now, so that sort of a thing. And I think just knowing that, yeah, I'm not in the forefront anymore. मैं थोड़ा अपना game करता हूँ, that thing. और वो रिफ्लेक्ट भी हुआ 3 ओवर 15 रन और वेदा ने जैसे बोला लक फैक्टर रहा है, लेकिन मेरा एक और मानना है, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप जब कैप्टन होते हैं और लीडर होते हैं ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. जब आप कैप्टन होते हैं तो आप ऑन द स्पॉट कई बार डिसीजन ले सकते हैं, कई बार प्रोएक्टिवनेस दिखी. आज धोनी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव थे, हर बात के मूवमेंट चेंज हो रहा था, बॉलर से बात करते, सब कुछ करते. जब जडेजा कैप्टन थे वो अपने इनपुट्स दे रहे थे, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे. वो थे ग्राउंड पे, कुछ डिसीजन ले भी रहे थे, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट जो आज दिखी वो पहले मैचेस में डेफिनेटली नहीं थी. तो ये डिफरेंस होता है जब एक कैप्टन बनता है और एक लीडर होता है. लेकिन ना आज दूसरा मैच भी हुआ था. आज दोनों ही मैच जो थे वो हाई स्कोरिंग गेम थे. लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हराया. सिर्फ 6 रन, यानी कि हम कहते हैं ना एक छक्के की बात. दामिनी, क्या वो जब अक्षर पटेल ने रन लेने से मना किया था, जबकि स्टॉइनिस को एक छक्का कुलदीप यादव ने मारा भी था. सो क्या वो महंगा पड़ा या फिर सेट था सब? मार्कस स्टॉइनिस को लास्ट ओवर मैं ऑनेस्टली यहाँ पे कहूँगी इकोनॉमी उनकी 9.49 की है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था कि मार्कस स्टॉइनिस को आप एक क्रूशियल मोमेंट में आप डेथ ओवर दे रहे हैं जहाँ पे डिफेंड करना है. और स्टार्टिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि पहला बॉल ही शायद उनका छक्का लगा था, फिर उन्होंने एक वाइड भी दिया था. लेकिन यहाँ पे मार्कस स्टॉइनिस की दाद देनी पड़ेगी कि कमबैक भी उन्होंने इतने शानदार तरीके से किया कि ही मेड श्योर कि रन्स दिल्ली कैपिटल्स ना बना पाए. हाँ, इक्वेशन कम हो गया, सिर्फ 6 रन से ही जीत पाई लखनऊ. यहाँ पे मैं कहूँगी लखनऊ की बॉलिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी.
फील्डिंग तो बहुत ही खराब थी, काफी मिसफील्ड्स हुए, बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, ये मैं कहूँगी। और वेदा ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही टीम जो आज जीती है ना उसमें फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, उसके बावजूद जीत हासिल की। इतना ज़्यादा ड्यू भी नहीं है, ग्राउंड भी अच्छे हैं, लेकिन फील्डिंग लैप्सेस इस लेवल पे आके हो रहे हैं, थोड़ा-सा अनएक्सेप्टेबल है ये। Pretty unacceptable because batting or bowling, you can have bad days. Things might हुँ, not work out because you're not, you can't really say. That is what, as cricketers, also we think about it. But fielding is somewhere when you need to give 100% every day, regardless of how you're feeling, whether you've got out of the first ball or you've got hit for like six sixes. You still have to go on and feel. But today, like I was telling, that both the games, fielding looked really हुँ, bad. Especially Lucknow was even more badder because they looked very lousy on the field. It was like straightforward. When you're dropping a catch, okay, once in 10 times you can drop catches, but the way they were moving, they were very lousy. Especially Jason Holder, हुँ, today he looked like, maybe his body is tired or he needs a break or something like that. That is something, the team management needs to sit and see how the workload is going on. But man, that was very very evident. I found, especially Jason Holder was very, very slow to the ball. He was moving very slowly today. हुँ। बैटिंग बैटिंग की बात करते हैं जयदीप, केएल राहुल वो नाम जो हमेशा यहाँ पे चमकता है और अच्छी फ़ॉर्म में भी है, आज भी एक यूज़फुल इनिंग खेली, पसंद कर रहे हैं रन बनाना और यही करना चाहिए जब आप फ़ॉर्म में हो। लेकिन एक एक प्रॉब्लम जो सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है नंबर 3 की, यही प्रॉब्लम थी लखनऊ के साथ और आज हुडा ने जो इनिंग खेली और साथ दिया केएल राहुल का, उसकी बदौलत ये पहुँचे 195। Yeah, absolutely. See, KL Rahul is now, three version player for India. हुँ, He is one of the pillars of the batting for India now. और वो दिखता है when he plays. वो कभी कभी दिखता है ना कि इंडिया प्लेयर दिखता है. You can make out even if he wears a different, even if he has a mask on and plays. Just the way he plays, it shows. The way he walks around, how he's in command, the quality of the shots, you can make out that this guy is a cut above the rest. That's the reason why they're playing for the country. It's not easy to play for the country. As you both have played for the country, you have to be special to play for the country. So that shows, and he's reveling now. He's now matured. He knows how to get runs. He's matured as a human being. So he's captain of a team. He's cool, calm, collected. He's seen it all. Been there. Has been through failures. Has been through tough times. So he's in a great phase of his cricketing life, and he's benefiting. The team is benefiting, and the way he captains. There's a sense of coolness, calmness about him. Love the guy. The way I think he's a future हुँ, India captain. हुँ। वेदा एग एग्री करेंगे फ्यूचर इंडिया कैप्टन केएल राहुल फ्रॉम All, कर्नाटका? he's already led India in the absence of Rohit Sharma, so I won't be surprised that he will be deputing Rohit Sharma going forward in the future games. He's not had a good record as a captain. That luck factor, what we talk about, certain players bring in. KL has been missing out on it. Maybe this is the year where things are falling in place, and he looks like a better captain this year. Last year we And saw him. Also Veda, on that, just on that, when he's captain, he doesn't have a full team. That's why he's captain. So that is also not. हुँ, But I'm talking about when he's captain and the full team is there, then Yeah, he'll yeah, have the record. yeah. No, I'm just saying, like, Yeah, because you're right. You're right. You're right. talk about this, with the way things have gone when he was playing for Punjab. There were a lot of close games where it's not gone in his way, and like I said, I've been talking about luck since the beginning of the show. I believe that certain kind of luck plays in your way, and Absolutely. what it is, like, MS is special because those kind of the games which goes in favor of him. Rohit as a captain is True. special because those kind True. of games go in favor of him. Where KL and Virat, I feel, are like similar, where it kind of tends to go against them. And but this year, like we've been talking, that he looks like a different player altogether. He's matured. Mm. He's understood. He's led India, so he knows, like, what needs to be done. So there is a different sense of poise, in him when we are watching him play this time. And maybe this is the year where those close games are going in favor of him. So might be हुँ, just change of luck. And हुँ, he told his franchise that I want to play for another franchise. Yeah. And he told the franchise, I हुँ, will only play if I'm captain.
So Yeah. you got to be really on top of your game to be able to say so much, because at the Yeah. end of the day you have to score the runs. That's how you make the team. So how Exactly. much are you in control of your game to be able to go and say, please do not retain me because I don't want to play for this franchise anymore. It's been a great, but I got to move on. Then go to Yeah. another franchise, say I'll only play if I'm captain. Shreyas Iyer has done the same thing, but Yeah. he hasn't had the success that KL Rahul has had because he's not as mature and not as ready a player as KL Rahul is. Not as experienced also as KL, I feel. Yeah, absolutely. वेदा Absolutely. ऐसे कहते हैं ना, बोल के मारा, वही यहाँ पे केएल राहुल कर रहे हैं। पहले बोला कैप्टन करेंगे और उससे परफॉर्मेंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दामिनी, डीसी पे आते हैं, बैटिंग इतना Also, चल where he नहीं रहा। comes from, also where he comes from helps, I suppose. वेदा की भी यही सोच है, वैसे मैं आपको बता दूं, बोल के इसीलिए मैं बोल करेंगे। रही हूँ उनके लिए. We do have the tendency of being a little She could confident. not. Sometimes we go She overboard, but it's fine, I guess. she could not say it, so somebody had to. दामिनी, दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। बैट बॉलिंग इतना चल नहीं रहा, 30-40 का स्कोर हो रहा है, बट टॉप 4 में से कोई लंबा स्कोर नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि लखनऊ की जो फील्डिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, आज बॉलिंग भी थोड़ी-सी इरेटिक थी, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं बहुत जल्दबाज़ी में नज़र आ रहे थे बैटर्स। दिल्ली की ओपनिंग तो पृथ्वी शॉ और वार्नर जिस तरह से आउट हुए, लग रहा था कि मतलब जितना उनका टारगेट है उसका आधा भी नहीं कर पाएगी शायद दिल्ली जिस तरह से। लेकिन फिर आई पंत और मिचेल मार्श की वो एक पार्टनरशिप जो थी, जिस तरह से वो रन रेट को मेंटेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं चलो शायद दिल्ली को समझ में आ रहा है, पकड़ पा रही है। फिर अचानक से मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं, कहीं पे शायद वो अपना मोमेंटम खो बैठे थे दिल्ली कैपिटल्स। और बॉलिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कहूंगी। रीमा मैम, आपने मुझे प्री शो में पूछा था शार्दुल ठाकुर के फॉर्म के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि अगर वो पावर प्ले में एक विकेट ले पाते हैं तो दैट माइट bring a change. And coincidentally, आज let's just say कि Delhi Capitals it is शार्दुल ठाकुर only who was the pick of the bowlers की 3 विकेट गिरे लखनऊ के, and तीनों के तीनों ही शार्दुल ठाकुर ने coincidentally लिए। So presumably I would say कि आप देखिए आज कुलदीप यादव कितनी बात हो रही थी, स्पिनर्स कितनी बात हो रही थी, स्पिनर्स ही आज काम नहीं आए। Contrary to that, pacers में it was only Shardul Thakur who stood out. So probably we can say maybe Shardul Thakur has found out his form. Yeah. Also बिल्कुल on आ this, if चुके I may add, today the spinners doesn't mean that हो जाएगा काम, जगह पे गिनना पड़ेगा. Today Kuldeep was loose, उसका इधर उधर बॉल गिर रहा था. So if you no matter how much loop you have and dip you have, अगर बैट के नीचे गिर रहा है वो तो छत पे ही जाने वाला है. So spinners also had an off day. Kuldeep was not at his best. जो स्पेल वो केकेआर के साथ डाला, वैसे जगह पे उनका बॉल गिरा नहीं. हो सकता है, हम सबका हुआ है. But I'm just saying that that's why we say who are the spinners. So sometimes the wrist spinners can have a little bit of an off day because they bowl their discipline is very tough. Rather than a Krunal Pandya, or a Shabazz, जो आके रब पे जगह पे डाल देता है. That's easier to put it on the spot than for actually a Chahal or a Bishnoi or even a Kuldeep, because leg spin, wrist spin is not easy to bowl. You can't be as consistent. It's just not possible. And if you are consistent, then you're a Shane Warne. Then you are, the greatest of all time. That's why are there 3-4 leg spinners? Why aren't there are 15 left arm spinners? There are 25 off spinners. Why are there 4 leg spinners? टफ आर्ट है और एक बैड डे हो सकता है। कुलदीप यादव अच्छा उनका जी, सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी जी। कर भी रहे हैं, लेकिन वेदा बैटिंग पे ही आऊंगी। मिचेल मार्श का वो डिसमिसल, ऐसा लग नहीं रहा था उन्होंने वो निक किया, लेकिन वो चल पड़े। शायद वो रुकते और रिव्यू लेते तो उसमें नहीं आता, लेकिन वहां से मोमेंटम टूटा था। फिर वापसी की कोशिश की थी पावल और अक्षर ने, लेकिन तब तक काफी मोमेंटम टूट चुका था। फिर मोमेंटम आता है, फिर लास्ट में अक्षर पटेल वो रन लेने से मना करते हैं, जबकि कुलदीप ने वो छक्का मारा था। सो कहीं ना कहीं वहां मिसकैलकुलेशन हुई है। Abhi, I agree that Kuldeep did hit a 6 in the first ball, but Akshar backed himself because for the fact that there's 2 balls and you need to hit 2-6. Who is the better guy who can do it? Whether it's me or him. So True. even if it is like 5% of chance that Akshar could do it better than Kuldeep, I mean, I wouldn't say that it was a wrong move from his side. Kuldeep might have hit a 6 in the first ball, but that is not something we see Kuldeep do. And Akshar was playing really well, and he backed himself to do it. It just didn't come off this time. Maybe he will probably. It's about execution. He couldn't execute it properly. So maybe next time, True.
similar situation, probably he will look into executing in a better way. And True. talking about Mitchell Marsh's decision, I feel, as a batter, sometimes you kind of know whether you've hit it or not, and you tend to walk away. So many players I've seen have this tendency, they just walk before the umpires given out or not out, and some people kind of stay back and try and see whether they could Veda, which one are you? I usually walk off. I don't even see. I don't even look at the umpire. But Okay. yeah, Rima, so what maybe about you? Rima will stand and fight with the umpire. मैं मेरा काम करूँगी, एम्पायर अपना काम करेगा, वो देगा तो मैं चली जाऊँगी। हाँ, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा थिक नेक ना हो, अगर जैसे फेंट एज होता है तो फिर एम्पायर का कॉल है वो। See, what Veda says, it is because of Aksar they went to 6 runs, as close as Yeah, that. yeah, So then he has to take the mantle. yeah, If he was 24 ball 42, yeah. उनसे हुआ नहीं, ठीक है। कुलदीप का जो है वो बोनस था। Yeah, because nobody expects Kuldeep to go and tonk. If you give 2 balls, 2 sixes, you would want Akshay to be in the crease. And I am happy that he did it. He didn't change over strike and put Kuldeep in that Yeah. Took situation where. responsibility. Took Yeah, responsibility. so he's taking responsibility. So you have to give. I'm sure the dugout must be really happy that he took responsibility and said, like, I'm the guy who needs to do the job. But True. coming about that dismissal, obviously there's a lot of ifs and buts, but it looked, there was a sound, there was two noises. Maybe he felt that he's hit. As Mitchell Marshall is a better person to tell whether he's hit it or not. Sometimes technology, whether it's hit or not, it can't be 100% right all the time. There's always a 0.1 margin. So maybe that was kind of a day. But like the way Rahman Powell and Akshay Patel is batting, I think they're just doing really good job as finishers. They just couldn't get them home today, but I think that combination is kind of coming really well. Then we were talking about Rishabh Pant's role, and he came all guns blazing, talking for ball one. I think that is what he needs to do, and that is what is his comfort zone. And he need to stick to that. If he continues to do that, probably Delhi will look a better squad. But if he but I'm happy that he's found his way and he's found that this is what my game is and I need to back it regardless of what it is. Had he got out hitting a six first ball, it was absolutely fine. But the way he got out, players, they were just clueless. They didn't know what exactly they need to bowl, because you just walk in and you're talking fours and sixes. That 19 runs for Krunal Pandey. It's not easy to hit Krunal Pandey with the new ball because he's quick. He kind of gets the ball away for the left-handers, but he picked it really well. So I think that kind of must be a little bit of positive for Delhi, and they must be happy going forward with this form. एब्सोल्युटली, बहुत सारे पॉजिटिव्स दिल्ली कैपिटल्स पे थे, लेकिन एक पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए था मोहसिन खान, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब पंत बैटिंग कर रहे थे, मिचेल मार्श कर रहे थे, कैसा लग रहा था कि मैच ले जाएंगे। फिर पावल आते हैं, पावल और अक्षर की पार्टनरशिप होती है, उसके बाद फिर मोहसिन खान आते हैं। जब मोहसिन खान आए ना, वो विकेट लेके गए हैं। जॉयदीप, इंडियन टैलेंट इस आईपीएल में निखर के बाहर आ रहा है। पेस उनके पास थी, Absolutely. शार्प वो नजर आए, बाउंस वो नजर आया, और सबसे अच्छी बात, हिटिंग द राइट एरिया। See, this is the advantage of playing first class cricket in the last 5-7 years, because I've been involved with, I'm still involved with first class cricket, and I see a lot of greenish wickets in first class cricket in Ranji Trophy. And I think that is why the influx of fast bowlers are coming up. Just not here, but every team now, you see every first class team has got 2, 3, in fact, very good seamers. Be it any team you pick out, especially if it's the elite group, they're all superb. Maybe they don't have spinners of that repute anymore, because the role of the spinners have diminished slightly because it's too green and not much happens for 4 days, and they bowl maybe 8-10 overs in an inning, which is not ideal either. But we'll keep the discussion for another day. That's the reason why these Akash Deeps, Mohsins, Kuldeep, there's an influx, and I'm sure जैसे हम बात कर रहे हैं, हर टीम के पास और 4-5 है जो मौका के लिए इंतजार कर रहे हैं, और उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी दिखा देंगे उनके पास भी है. It's not easy to break it into the 11. It is not easy. But once you break in, then you get to see what the talent are. And I think this will be a continuing process. And I think between the spinners, the batters, and the fast bowlers, the fast bowling talent is more on our face than the spin and batting is. Batting mein theek hai, Badoni has done well in bits and bobs. But if you look at the bowling, because they bowl 4 overs, 24 balls,
playing bowling to the greatest batsman in the world under tough conditions at the end, in the beginning. So you get exposed more, and there you have a chance to flourish as well, just like Mohsin did today. True. We saw Damini, Yash Dayal the other day. We saw Yash the other day. So these are people. I mean, not a lot of people would know about Mohsin and Yash unless you're really following first class cricket. And now they're all household names, as is Kuldeep. कुलदीप सेन, मैं भी वही कहने वाली थी। दामिनी, लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा खेल रही है। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं, सुपर जायंट्स सुपर जायंट्स की बात करूं, आज 7 मैचेस में आज तो आपके मुंह से सुपर किंग्स किंग्स ही निकलेगा। पास है, अभी सीएसके आज का जीती है, पास है। आज सारी गलतियां माफ है। 7 मैचेस में 7 विन्स में से 6 डिफरेंट मैच विनर्स, मैन ऑफ द मैच, और यही गुजरात टाइटंस को, सुपर जायंट्स को एक अलग टीम बना रहा है बाकी टीम से। एंड यही शायद बॉटम प्लेस टीम्स की मैं बात करूंगी, सीएसके, केकेआर, खासकर केकेआर और एमआई की आप जरा इन दो नए टीम्स को देखिए कि इनका हर एक प्लेयर, ये जो 6 मैचेस में डिफरेंट मैच विनर्स है, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर एट द टॉप टुडे, क्योंकि उनका कोई एक प्लेयर नहीं है जिसपे पूरी टीम डिपेंडेंट है हर बार की टीम डेंजरस पोजीशन में रहेगी और वो इकलौता प्लेयर आएगा बार बार और जिताएगा। ईच एंड एवरी पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग, सो एज यू आर प्लेइंग अ टीम स्पोर्ट, सो टीम स्पोर्ट का हर एक member has to contribute equally. One person fails, so the other person has to come and contribute. टीम वर्क, और मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन दोनों टीम से सीखा होगा, मुंबई से और सीएसके से। ये साल उनका अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इनसे बहुत टीमों ने सीखा होगा। 2-2 पॉइंट्स लेके सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स अब ऊपर 1-1 नंबर आ चुकी है। आज का डबल हेडर हो चुका है खत्म, लेकिन कल एक महा मुकाबला है। वेदा, किसका मैच है पता है ना? कल किसका है? आरआर का तो है। सामने कौन सी टीम है? काफी टाइम से जीती नहीं है, नाम ही याद नहीं आ रहा। किंग्स का नाम ही याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। बता, केकेआर कुछ बोलना चाहिए? केकेआर है शायद वो। लास्ट ईयर का रनर अप था शायद, और 2012 और 14 में एक साल पहले की बात कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। अरे आरसीबी तो 15 साल में नहीं जीता है, 15 साल। It's 2022. Veda, RCB has not won since 2022. Veda, RCB has not won since you were in school. वानखेड़े पे कल जो मैच खेला जाएगा वो महा मुकाबला है, आरआर वर्सेस केकेआर। Oh, RCB has not won since Veda has been in school. 2022, Joyda, what position KKR is in? 8th? Oh my God, that hurts. And what is RCB? About आरसीबी तो 5th नंबर पे चल रहा है, ऊपर, केकेआर से ऊपर। सीजन खत्म कर लीजिए। I don't care if then the table top they're ahead of KKR. No, that is enough for me. By the end of the tournament. That means you've given up hope. I'm not giving up hope. I just want it to be above KKR. That's it. केकेआर तो आने नहीं वाला। वो उनके लिए वही ठीक है कि केकेआर के 1 नंबर चाहे ऊपर है, वो ऊपर है। अच्छा, लेकिन वानखेड़े में ये मैच हो रहा है, इस मैच पे आ जाते हैं। जाने से पहले कल ये इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए, स्पेशली केकेआर के लिए, जो अभी भी अपने डीरेल उतरी हुई है, कभी ऊपर पटरी में आने के लिए काफी कुछ कोशिश करी है। जयदीप, क्या करना होगा? कैसे एकजुट होना पड़ेगा? कैसे वो सेल्फ बिलीफ दिखाना पड़ेगा कि हम जीत सकते हैं अभी भी? Yeah, it's tough. It is really tough because I've been in situations in a team when your team is not playing well, and the morale is very low. There are people who are trying to uplift the mood, but just doesn't happen because you just don't have the belief in the dressing room. Because hua nahi hai. What I would really like to see is go with your best team and play the people at the right positions. And then if you lose the next 5 games, so be it. How can Pat Cummins not play in the 11? You've got Sam Billings. You're going, Pat Cummins is probably one of the number 1 cricketers in the world. Yuvraj just tweeted today that how can you keep him out of the 11? So it's just panic. आज ये, कल वो, परसों अच्छा आपका नहीं, आप आ जाओ। बारी ऐसा होता है ना, अच्छा आप नहीं, आप एक भी खेला नहीं, आप आ जाओ 2 मैच के लिए। ऐसे नहीं होता। You go with your main team. उसमें अगर आप हारोगे तो हारोगे। ऋतुराज गायकवाड़ has failed every game he's played. Has he moved from open to even 3 or 4? He hasn't. ऐसे ही बनाते। ये 99 कर दिया, आप देखना उनको। तो अगर आप आधा पैट कमिंस को नहीं खिलाओगे तो उसका फॉर्म कैसे आएगा? ड्रेसिंग रूम से, डगआउट से।
बिल्कुल, बिल्कुल जयदीप, और ऐसे ही कॉनवे को भी उन्होंने खिलाया, उन्होंने स्कोर किया, टिम डेविड को मुंबई इंडियंस ने खिलाया, उन्होंने स्कोर किया। वेदा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पैट कमिंस से था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आप कब लेके आएँगे? हाँ मैच विनर है वो, एक आधा मैच खराब जा सकता है, वो सबका जा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने 14 में से 14 मैचेस में जो आपको रन्स करके देगा या और विकेट्स लेके एक देगा। एक में जो खराब गया बैटिंग करके मैच जिता दिया वो वाला, मैच जीता 14 बॉल 50, अभी तक किसी ने 40 नहीं किया। 48 रन दिया था और 14 बॉल 50 का मैच भी जिता दिया। तो उनका काम बॉलिंग में नहीं हुआ, बैटिंग में तो काम कर दिया। ये यही मेरा क्वेश्चन था कि एक खराब गेम आपको बैड प्लेयर नहीं बनाता वेदा। See, Pat Cummins, like Joyda was saying, he's one of the top cricketers, like top all-rounders in world cricket. वो top five में भी आ जाएंगे, I think. Not just we're not talking about all formats here. We're talking even if you take individually, you take different formats, he still will fit in all the three formats. I feel, and he is a match winner. He wins you games. The day he has a good day on the field, you're winning the matches. So I was pretty surprised that Pat Cummins did not play. Like you're backing Russell to do it every time. You've backing Narayan to do it every time. But why aren't you backing Pat Cummins? Because that is where I feel there's a lot of panic and there's no clarity about roles. There's too many True. chopping and changes in the batting order. Apart from Shreyas Iyer walking in at 3. You see that a lot of things are happening. You don't know who's opening. Venkatesh Iyer will opening 2 games, then he'll go at number 6, then he's back at opening, then like chalo TK will try Sunil Narayan opening. It doesn't work like that. You can't go with Then Sam conviction. Billings is opened. Yeah, Sam then Billings Sam is Billings opened. will Aaron open. Finch is opened. Then Aaron Finch will Nitish come Rana back. has played 3. Then Nitish Sheldon Rana has played Jackson 6. will come back. Yeah. Sam Billings is dropped. Jackson's done well with the keeping, but he still gets dropped and they get Billings in. So you can't just go with conviction. You cannot just put 11 people on the paper and on the field and say, okay, abhi jaake khelo. There needs to be some kind of strategy. There needs to be some kind of chemistry between the players, and roles need to be defined. Until and unless you do not give roles to the players, no matter how good a player they are or no matter how top cricketers they are, when there is no clarity in the head, you be like, "Aaj main kar lungi, kal pata nahi kya hoga." Then you're not playing the game. So you need Yeah, to know true. this head entire thing needs to be empty when you walk in, because that is when And you're going to get performance out of players. And and I think, also to add to that, can you imagine if I'm a player now going to play for KK and I'm thinking, यार एक या दो गेम है, तो बाकी को पीछे को देख, एक गेम के 2 गेम के बाद बैठ गया है, तो yeah, जो करना है भैया 2 गेम में करो. yeah, That's not the way to play, back to play. that's not मेन how, थिंग how it चॉपिंग works. चॉपिंग चेंजिंग इसको आप कम कीजिए, प्लेइंग 11 को कंसिस्टेंट रखिए, अपने ओपनिंग स्लॉट्स आप हर मैच में ओपनिंग पेयर कौन है हमें नहीं पता, अब चेंज हो रहा है, नंबर 3 में हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता है, आप कंसिस्टेंट रखिए, आपके जो प्लेयर्स हैं उनको बैक कीजिए, उन पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो उनके खुद से आएगा कि हाँ मैं करूंगा टीम के लिए. ऋतुराज गायकवाड़ भी तो नहीं खेल रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उनको बार बार बैक किया गया है, एंड टुडे दिस इज द रिजल्ट. तो आप भी बैक कीजिए अपने प्लेयर्स को. And Back I your think, players, give them the I role. think when actually we're talking about match winners here, uh, when you put 11 on the field, you know for the fact that all 11 who are there are not match winners. They probably can win you games here and there, but they Moments. can't do it regularly. So you need to choose who your match winners are, and you need to give them regardless of whether performing or not. And then the other guys who will play around and do their bits, then it'll look nice. If you're not going to play your match winners and then you're expecting things to come and work it on its own, it is not going to happen. सामने उनकी टीम है आरआर, जो पिछला मैच मुंबई से हारी थी, हार के आ रही है अब, लेकिन वो टीम है जो एक बैलेंस टीम नजर आती है. दामिनी, क्या उनकी अप्रोच रहने वाली है, स्पेशली जब आप मुंबई जैसी टीम से हार के आते हैं जो इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हार आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. राजस्थान तो कंसिस्टेंटली जीतती ही आ रही है. केकेआर को भी उन्होंने हराया था, जॉस बटलर उनके पास है, युजवेंद्र चहल की का तो हैट्रिक ही था केकेआर के खिलाफ. अब मुंबई के खिलाफ एक मैच हार गए हैं, तो हाँ होता है, कहते हैं ना कि एक मैच आप हारो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ गलतियां हो गई हैं, टेक्निकल ग्लिचेस है, उसको ठीक करके आप दोबारा बाउंस बैक करो. राजस्थान हाँ स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कोलकाता पे विश्वास है, कोलकाता पे विश्वास है. जयदीप, एक बिल्कुल है. क्वेश्चन और आरआर के लिए,
इट इज हाई टाइम फॉर संजू सैमसन। क्या आप कोचेस को बात करनी चाहिए कि बॉस यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप अपने विकेट्स ऐसे थ्रो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यू मिडिल ऑर्डर जल्दी एक्सपोज हो रहा है। और वो फिर शायद Absolutely. कप्तानी में भी रिफ्लेक्ट किया था, कुछ टेक्टिकल एरर हुए थे, आपने पराग को और हेटमायर को नीचे रखा, आपने मिचेल को ऊपर भेज दिया, वो सब रिफ्लेक्ट होता है जब आपकी बैटिंग नहीं चलती, स्पेशली आप बैटर हैं अगर एज अ कैप्टन। तो I'm sure Mahela Jayawardene उनसे बात कर रहे हैं कि take responsibility, take ownership. You're number 3, you're not number 6. You're not Riyam Parag in the 18.2 overs कि जाके घुमाओ, हुआ नहीं हुआ. महिला लेकिन जयवर्धने अगर की बात करेंगे उनसे, sorry, this one. संगकारा। Kumar Sangakkara, sorry. हाँ, Two मैं best सोचा friends, I कि got the name wrong. जयवर्धने का माल चला गया। नहीं, 12 o'clock in the night, मेरा भी brain. So Sangakkara is talking to him and telling him to take responsibility of the place. You're number 3 player. You know, हम लोग सबको पता है कोई भी version में number 3 का कितना ज़्यादा मायने रखता है. Whether it's test, whether it's 4-day, 5-day, 1-day, T20. 3 is known to be the backbone. The best players in the team bat at 3. You know, 3 is the one that gets the team going. Look at the 3s, the Rainas and all. You know, the number 3s who have been in IPL, the greatest number 3s ever. So उधर मेरे को लगता है कि, you know, he needs to be told to be a little tighter, put a little more price on his wicket, because, you know, he's right now he's looking like Riyank Parag in 18.2 overs कि जाके घुमाओ, नहीं हुआ तो अगला वाला जाके घुमाएगा. But he is a guy who can, you know, he'll play a couple of shots, you know, like, wow, we're in for a nice treat, and then, oh my God, where did that come from? So ऐसे होता रहता है, you know, he flatters to deceive. So ये नहीं होना चाहिए. And I just hope, because, you know, every year in the IPL he plays a couple of innings which baffles you. But there are many, you queue up and you stay up, you say, घर चलते हैं जल्दी, Samson batting कर रहा है, and then you feel let down a bit. But he's a superb player, and I feel that if once he can do this bit, he will play for India a lot more. अपनी गलतियों से सीखना होगा। मुझे लगता है उनको केएल राहुल को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर प्लेयर हैं, वो भी क्लास शॉट्स खेलते हैं, ये भी क्लास शॉट्स खेलते हैं, बट ये बहुत हाई रिस्क शॉट खेलते हैं, काफ़ी एयर में खेलते हैं। वेदा, शायद यही इनका एक ड्रॉबैक रहा है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती जब आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क, हाई परसेंटेज रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो। Yeah, I mean, like you saw yesterday, he tried to go against the spin, और जहाँ पे बाउंड्री बड़ा था, like had he pulled that ball, I think it would have been an easy 6. He tried to target an 80-meter boundary, that too for a ball coming in. So I think, and slash also, not a hit, like a slash. Yeah, like slash it, literally trying to cut it to you know, for a 6. When there is a faster bowler, probably, you know, the pace can carry it out. But for spinner, if you're trying to take him on a bigger side, or is it like, you know, it's just like, oh, no matter how big the boundaries, I'll be able to hit 6 because I'm strong. It doesn't work like that. No matter how strong you are, you need to perfectly, you know, match all the dynamics for the ball to travel. So that is where I felt like, you know, he moved and tried to hit it in the offside. That are kind of, you know, left me a little confused, like what was he trying to do. Had he tried to pull it, probably he would have got a 6 runs. And that is the template of game how he plays a lot of shots in the air, especially for the spinners. He takes them on, but what he does well is when he hits straight. Probably, you know, if he sticks to that and not try too many shots, I think he will be good. He's done really well for RR in the last year, but that kind of thing is missing. Spark is missing. They've stopped bowling full and up to him now on the stumps for the same reason. And at the now same they're time, bowling off stump ke bahar dur wala, because, like you rightly said, just to add to that, you know, it's, you can't hit a shot and pray ke nikal jaye. You use your brain and hit the shot. That's what good players do. Yeah, and for the fact that I feel he's not coming at number 3 also all the games, that also might be a thing. They started off at 4, then they dropped Yashasvi, but he still continued coming at 4. I think he needs to come in at 3, and, you know, own it up, take responsibility, and say, like, I'm going to do it for the team. I'm the captain. It's my responsibility to do it. We see Hardik Pandya doing it, so I don't see you know, it should be any different for Sanju Samson. ट्रू। देखते हैं कल क्या करते हैं संजू सैमसन, आरआर या फिर केकेआर। लेकिन अब जाते थे फटाफट से एक प्रेडिक्शन टाइम। दामिनी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स, चलो, इनका तो विश्वास केकेआर के साथ है। लोरबो जीत गो रे, जो मोटो है उसी को हमेशा फॉलो करना केकेआर है। इस बार नहीं है तैयार, केकेआर इस बार नहीं है तैयार। वेदा, क्योंकि जयदीप भी दामिनी के साथ हैं।
There is no two questions about it. I have आज to का go with ये क्वेश्चन ही, चलो ये क्वेश्चन ही गलत है, राइट जयदीप? yeah. रीमा जी आप चूरमा कमाल कर रहे हो, हम तो वहीं जाएंगे दाल चूरमा बाटी चूरमा। बिल्कुल बिल्कुल, केकेआर तो कहाँ है, आसपास भी नजर नहीं आ रही, 5 मैच लगातार राजस्थान तो हार पास चुकी है है। दिल्ली का, ऐसे सीएसके हॉप भी जाओ। आसपास सीएसके भी आसपास नहीं थे, आपने फिर उनको बैक किया आज। सीएसके आप तो आसपास में, आसपास सीएसके दिल में है। मैंने उसका कई चीजें जवाब दे दिया, हम मुझे दिल से ही पता है जीत वो क्या जाते हैं। बोलेगी। I know अभी what आप she's मानो going to या ना मानो, मानो या ना मानो, वही मैं इनको समझा रही हूँ, मेरा दिल रेड नहीं है भाई, येलो है भाई। और वैसे भी देख लो ना, I know what her answer is going to come. धोनी आया, लक लाया, मैच ले गया, और क्या चाहिए लाइफ में? केकेआर को क्या चाहिए? एक मैच और चाहिए आगे को, 2 पॉइंट। केकेआर को तो लास्ट ईयर भी सीजन सेकंड एडिशन में राइट ऑफ कर दिया गया था। आप कमबैक देखिए केकेआर की। बेटा दिवाली साल में कितनी बार आती है? एक ही बार आती है, आ चुकी है क्या? लास्ट ईयर जा चुकी उनके है। तो पता नहीं क्या चल रहा है। I हर like दिन दिवाली नहीं seriously होती, हर दिन संडे नहीं होता। give you award for still hoping. Oh my god. Damini, never speak about history to RCB fans. Don't talk about history. They don't study history. 49 ऑल आउट और History- पावर प्ले में 105 ऑल आउट अभी भी टूटना बाकी है। गिर के हेलो, उठने वाले को ही KKR खिलाड़ी last कहते time हैं। तोड़ा था। लास्ट टाइम केकेआर ने तोड़ा 49 ऑल आउट, 49 Last ऑल आउट और KKR पावर प्ले में Shoaib, 105 नॉट आउट Shoaib, टूटना अभी भी Shoaib. बाकी है। चलो 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, और यानी कल नहीं, आज जो मुकाबला होगा वो होगा आरआर वर्सेस केकेआर। वानखेड़े में ये खेला जाएगा, क्या होगा, KKR bowled out for how much? क्या क्या होगा If वो you're मैच भी listening, देखेंगे। वेदा please send it across before this ends. I really want to know the score line. जरूर इस पे बात, वेदा इस पे कल बात करेंगे, अभी टाइम टू स्लीप ना है, बहुत देर No, होगी, no, I'm 12 just बज गए हैं। asking so that she keeps it ready. Yeah, whenever she's ready, त्रिशा, then I can स्टैट्स you know. रेडी रखना, हम कल डिस्कस करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। टेक केयर, रेस्ट वेल, क्योंकि कल एक अच्छा मैच है। मिलेंगे कल शाम को ठीक 7 बजे। टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ। गुड नाइट।